in the last class, I'm hoping against the hope. Have you practiced any of those? Anyone? Yes, Yes, sir. Okay. Sir, Yes. sir, I was unable to unzip the file. I think I missed that part. So, What have you missed? sir, how to unzip the file? Like How to? it's zipped. How to unzip the? I mean, I have installed it, but then no, I have downloaded it, but then I'm unable to unzip it. How to unzip the file? Unable to unzip. Yes, sir. Is it really something to be taught in the class? Sir, I'm not sure. yeah, it is not, I I mean, is feel, it but really something to be taught in the class? I'm really unsure about your questions, Tamalika. Class, have I shown how to unzip the file? Any one of you? okay, No, sir. sorry, sir. I thought it was taught, it was shown in the class, so I thought I should ask. I asked a few of my Do friends, so they said, anything, see other videos, take yes, help of your friends, install yes, the sir. software. Okay, sir. Okay. Yes, sir. You are into the second year of computer science and engineering and you are asking me how to unzip a file. Sorry, sir. Yeah, you should be. Yes, sir. Switch off your mic. Okay. Uh, so except for Tamalika, everybody else have done it. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So we will take the class further. We will just go for a quick recap about how this is being done. So, any one of you having any problem in this create table? This one? I have this command create table. Then you go for this table name. Then you go about this attributes followed by each attribute is followed by the domain of that attribute or the data type of the attribute. So ID character 5. Now here whenever we are looking into this one, be very specific or be very careful about writing all this stuffs. That is not null and all. Why? Because at the time of entering or inserting any rows, if you commit any mistake, that is you have not supplied the value of name, your query will not be running. Similarly, you see, they have added this integrity constraints. They have added this same table. They have added this. Yes. Sir, Oh, PPT is सर showing. प्रेजेंटेशन देख नहीं रहा. okay. Sorry. I forgot. Very sorry. Just a minute. I will take this call and. Okay. So I was just talking about this one. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. I hope you have executed this create table. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'm counting on your words. Now, have you? We have seen this one as well. That is
Same table, instructor, and then we have added foreign key. So foreign key and primary key. So for foreign key, you cannot go on. Have you executed this program? This one? Have Yes, anybody? sir, Have- but without Yes. the primary key and foreign key, just the Yes, sir. top Primary four. and foreign key. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you see, I'll take this to a table. Say another table I have taken. So I go for ID. CHR. I have taken it as 5. Name. What else can we keep? Let's say street. And then area. Remember, my SQL commands, not commands, this variables that I am giving in, these are case insensitive. If you write it capital NAME name, it is also the same. Small NAME name, it is also the same. Either in the lower case or in the upper case or in the mixed form, they are case insensitive. Do remember this. I have taken this. I hope this runs. Error invalid identifier. What is it? Line 7. Okay, anyway. Create table. This one. Name I have given. Street I have given. Area I have given, and now क्या हो गया भाई? Name is an objective. Just done. Should not come like this. They've already been using everything. Acha, okay. It's already there, that's why. It's already there, that's why. Anyway, create some person ID character 5.
Sir, Yes. shouldn't that be create table and then there should be the name Yeah. person? Yes. 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 It's very difficult to go back in this one. That's create. ID create. I have not used name. Okay, table created. Now, I have, you see, I have not given any primary key or foreign key in this case. Say suppose if I want to give a foreign key, altered table person, add primary key ID. You see, table altered. Even if you have not given the primary key earlier, we can use this alter table to give the primary key. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. At the same time, creating this table and now giving a foreign key. Say, for example, I am giving a foreign key to be name. Okay. Alter table person, add foreign key. What do I add foreign key? Name. References, the table name that you have to give. So for example, I have already have a people as a reference name. So I don't think it will take. Say this query will not run. Why? Because we don't have incompatible with reference column type. We don't have within this people, we don't have a name. We don't have a name. So while giving a foreign key, the parent table must be existing. The parent table must be existing. Okay. So if I give like instructor, I have this one. Okay, I have already created all this. I have created this one as well. Okay, you will see as and when it comes by. So for primary key, either you can do it like this, that is create table and then instructor, give the attribute list, and at the end you can declare primary key. Otherwise you can create table ABC and this one ID give 5 and then you can write primary key here. And
IC number, you see, this will also do. Got the point? Got the point? Yes, Yes or sir. no? Yes. You getting bored or what? There is no other way of teaching this, I guess. Are you getting bored? No, sir. No, sir. Anjali is not getting bored. Anku is not getting bored. Shantan Paul, you are getting bored. No, sir. So, are you doing it with me or not? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So, this is the way. One way is to, create the table. One way is to create the table. Once you have created the table, now you want to give a primary key. You go for this alter table. You go for this alter table, that is alter table, table name, and then add primary key. Similarly, this will also work. This one, alter table person, add foreign key reference pool, but provided that the particular table that you are referencing does exist, and the particular key that you are making the foreign key must also be compatible with the present table. That is, my table person must have a attribute name. It must be compatible. The domain of this name must be compatible with the attribute name in table people. Okay, if this mismatches, something like this column type incompatible with the reference column type, something like this, one error like this will come. Okay? Yes. Could you get this? Yes or no? सर डोमेन मतलब जो जो एलिमेंट उस एट्रीब्यूट्स में है वो उस दूसरे टेबल में भी Domain are सेम this ही one. होना पड़ेगा मतलब Domain are, yes, domain are this one. Attribute. domain नेम are this लेना है तो उसमें भी नेम ही होना पड़ेगा तभी होगा वो हाँ, नेम लेने से नेम ही होना पड़ेगा, बट उसका डोमेन भी सिमिलर होना पड़ेगा. नेम में अगर आपने न्यूमेरिक डाल दिया, कैरेक्टर ही होना पड़ेगा सिर्फ कैरेक्टर ही होना पड़ेगा हाँ, आपने अगर न्यूमेरिक डाल दिया तब तो नहीं होगा. समझ रहे हो? यस सर varchar का कैरेक्टर लेंथ भी इम्पोर्टेंस रखता है क्या वो कंपैटिबिलिटी में? varchar का कैरेक्टर लेंथ को वो कंपेयर नहीं करेगा, बिकॉज varchar का तो कैरेक्टर लेंथ हम लोगों ने लिमिट दिया है. नाम दिया है, एक्चुअल नाम जो है वो लिमिट से कम ही होगा ना, उससे बड़ा नहीं ले सकते. हाँ, अच्छा, लिमिट में कंपैटिबिलिटी में इम्पोर्टेंस नहीं है. When I am giving this varchar, कहाँ गया मैंने, कहाँ दिया? When I am giving this varchar, this account number must not be greater than 8. It can take something 5, 6, 3, 2. It cannot take greater than 8. That is the meaning. Okay. आया बात समझ में? सर वर्कर हाँ। के बाद टू लिखा क्यों कौन सा? ये जो वर्कर लिखा है इसके बाद टू हाँ। क्यों लिखा है ये मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है इंस्ट्रक्टर का. नहीं बाकी जगह में जैसे टाइप कैरेक्टर कार लिखा हुआ है हाँ, ये नंबर लिखा वर्कर हुआ 2 है है, ये टाइप 2 है, वर्कर टाइप 2. इससे पहले एसक्यूएल जो यूज करता था वो वर्कर 1 था. ओ, अभी यहाँ पे मैं देखो 2, 3 कुछ नहीं दे रहा हूँ ना. हाँ यहाँ पे 2 जो आ रहा है हर जगह में, देखो जहाँ पे भी डिस्क्रिप्ट कर रहा हूँ वर्कर के बाद 2 आ रहा है. ये डिस्क्रिप्शन में आएगा आपका. ये जो वर्जन है ये आपका उसके ऊपर है. ओ, अर्लियर वर्जन वर्कर यूज करता था, उसके बाद अभी वर्कर में जैसे जैसे आप और कंपैटिबिलिटी और ज्यादा आप डालते गए इसमें और ये इंप्रूवमेंट डालते गए, उसके लिए ये वर्कर 2 आ रहा है. बाय डिफॉल्ट इट यूजेस वर्कर 2. माई एसक्यूएल में वर्कर ही आएगा. ये मैं ओरेकल यूज कर रहा हूँ. माई एसक्यूएल अगर हम देखें तो मुझे जितना याद है
लास्ट माई एसक्यूएल 2014-15 में मैंने यूज किया था, तो तब वर्कर आता था. अभी I have not used recently. Maybe they have also upgraded it to worker. Maybe, I don't know. Okay, आगे बढ़े. Now ये सारे टेबल्स मैं क्रिएट कर चुका हूँ कोर्सेस. एनीवे, नाउ we have already seen this particular drop table. Have you seen last time? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. क्या करता है ड्रॉप टेबल? Deletes the relation, the whole relation. पर्सन क्रिएट किया था ना, पर्सन. टेबल ड्रॉप. ये एक और पर्टिकुलर है, इसमें ये काम करता है कि नहीं, आई डोंट नो. रोल बैक कंप्लीट देख लो. डिस्क्राइब पर्सन को क्या था, पर्सन. अरे पर्सन तरीका. That person does not exist. Okay, we have already dropped this. That's why it will not be coming. So next thing, delete from student, delete all contents of the table. Now what is the difference between my delete and this one? So one is DTL, drop is DTL, Okay, while delete is not. say for example, I failed to show you this rollback. Now I'm trying to show this. This rollback does not work in DDL commands. Okay. Select star from instructor. You can see this. I have populated this one. We have some IDs. We have this names. So as I can select, I can delete from instructor where name is, say, Chetan. One row deleted. So if we select from instructor, you see here 10002 Chetan AG 70,000. Here it is not coming back. Here when we are selecting the entire table, that particular row has been deleted. So let's see whether this rollback works here or not. Rollback, okay. Can you see this? Can you see this or not? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. You see, I have first the instructor. I have this. I have already populated. Okay, I am not writing that insert command. हाँ, ये बहुत time लेता है. I have shown you yesterday. Yes. Yes sir. Yes, sir. दिखाया था कि भूल गया था? दिखाया था ना? याद है नहीं है? यस सर तो बोल देते. इंस्ट्रक्शन. Yes, sir. अच्छा. हाँ सर, लिखा था. हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन दैट, ये मैंने अभी तक आप लोगों को इंसर्ट में सिर्फ सिंगल रो एट ए टाइम ही डालना सिखाया है.
As and when time comes, we will see all those stuffs. इंसर्ट में सेलेक्ट ऑपरेशन कैसे किया जा सकता है, इंसर्ट में कुछ और कैसे किया जा सकता है, दैट वी विल शो. एनीवे, सो सेलेक्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, स्टार्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, वी हैव selected all the entire table. Now I have delete from instructor where name is Chetan. You see, Yes, sir. if I would have given delete instructor, what it would have done, it would have deleted everything, leaving the schema of the table intact. यानी attribute values सारे के सारे delete कर देते. तो यहाँ पे वन रो डिलीटेड. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर से सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर. यू कैन सी द रो कंटेनिंग चेतन इज नॉट देयर. ओके, नाउ आई हैव डन दिस वन, रोल बैक. व्हाट इज रोल बैक? गोइंग Undo बैक. operation. Undo operation. One can say it is an undo operation, but it is something like going back to a previously saved state. Going back to a previously saved state. So after that, once we have done this rollback, we will be getting the entire table. Is it clear? Yes, सर, sir. तो हम Yes, लोग sir. अगर ड्रॉप टेबल कर देंगे तो फिर से रोल बैक करने से क्या वापस टेबल नहीं आ होगा, जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा. डीड अभी वही मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था. ये देखो ड्रॉप टेबल पर्सन मैंने किया, टेबल ड्रॉप्ड हो गया. उसके बाद मैंने रोल बैक किया, रोल बैक कंप्लीटेड. रोल बैक कंप्लीटेड मतलब इससे पहले अगर मैंने कोई सेलेक्ट किया DML कमांड यूज किया था वो करेगा. उसके बाद ये देखो DESC पर्सन, ऑब्जेक्ट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट. द एंटायर टेबल हैज बीन ऑलरेडी ड्रॉप्ड. इट विल नेवर बी रिटेन बैक, रिगेन बैक. यस सर. ये रहा आपका, यही एग्जांपल है. इसी को दिखाने के लिए मैंने वो किया था. वी हैव यूज्ड अ DDL कमांड है, ड्रॉप टेबल पर्सन. पर्सन वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग समवेयर, so we have already dropped this table. Now we have done something like rollback. Once DDL यानी आपका पूरा का डेटाबेस को अल्टर कर दिया आपने, चेंज कर दिया आपको, this will not come. Clear? You see, DESC Yes, sir. person. DESC का फुल फॉर्म है आपका डिस्क्राइब टेबल. ओके, इट विल डिस्क्राइब द टेबल. So the object person does not exist. Rollback is clear. Delete Yes, command is clear. यस सर. यस You see, we can really write complex queries in this way. Like select, we have select. What are the things that we are selecting? Here I am selecting star. Here I am selecting star. Star meaning what? Star meaning I am selecting each and every attribute value. From where? From instructor. Similarly, delete from instructor where name is this one. Where name is this one. Okay. Let's see. सर मतलब डिलीट क्या कंप्लीटली डिलीट नहीं करता है वो रो को, टपल को? Delete. Third. 5 rows deleted. Select star from instructor. तो row selected. बात समझ में आ रही है? अभी किसी ने पूछा था, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर. यस सर. All the things have been deleted. अगर आपको हर चीज डिलीट करना है, ठीक है, I'll just roll back and hope so. Hope so it comes back. Yeah, ठीक है, अभी ठीक है? किसने पूछा था?
किसने पूछा था? सर मैंने। हाँ, अभी समझ में आया? हाँ ओके, ठीक है. So they have given this: delete from student, delete all contents of table but retains table. This from is not necessary here. We have shown this one. Delete instructor, 5 rows delete. Okay. Okay. But whenever you are trying to delete on the basis of some condition like this, delete from instructor where there is, you are putting some where clause, some predicate clause, then this from is necessary. But if you are just deleting everything, just सब कुछ हटा देना, just you write delete and table name, 5 rows delete. We have just given a rollback again so that we can gain whatever we have deleted. इसका काम पड़ेगा इसलिए. So alter table मैंने आपको एक example दिखाया था. We can add integrity constraints. Alter table can also be used to truncate or add. Truncate meaning not truncate. We can delete these attributes. Okay, alter table use करके we can delete this attribute. We can add some more attribute. We can delete some attribute. We can add some more attribute. So one of the examples here we have alter table are add A, B, where A is the name of the attribute to be added to the relation R and D is the domain of A. So let's start. कैसा है इसका alter table R, AL alter table instructor add कर दो पिन. डोमेन क्या होगा? न्यूमेरिक. let's say 7 2. Hope so it works. Table altered TSC instructor. You see, one more pin has been entered. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Similarly, we can delete this attribute as well. Alter table instructor. Sorry. अब क्या था? Pin. Keyword missing. Is the name of the attribute. Okay, if it is not supported, I don't alter table instructor pin. It should. इसका आवाज आ रही है. Missing keyword. तू था क्या? हाँ. Maybe it is not working, or maybe I have done some mistake. ये पहले मैंने प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए मुझे पता नहीं है अभी.
क्या कर रहा हूँ, अल्टर टेबल इंस्ट्रक्टर, इससे पहले क्या था, अल्टर टेबल इंस्ट्रक्टर ऐड, अल्टर टेबल इंस्ट्रक्टर, इसमें क्या लिखा है, आर ड्रॉप ए, अल्टर टेबल, लास्ट ट्राई, टेबल इंस्ट्रक्टर TIN, fine. Okay, leave it. We will see later. Anyway, so basic SQL queries. The data manipulation language provides the ability to query information and insert, delete, and update tuples. A typical SQL query is of the form. We can see this is of the form. This one is of the form. I select the attributes and then I give him supply from where we have to select, that is the table names, and then give you the condition, give you the condition. So AI is the attribute, Ri is the relation, and P is the predicate, that is the condition. Now, as we see, select name from instructor will give you all the names of the instructor, all the names of the instructor. We can obviously write select ID, name, department name, और क्या था भैया, सैलरी, सैलरी का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक वहां पे किया था, क्या था, सैलरी SLARY from instructor. I hope this works. Yes, this is working. Okay, either we can give entire this one. Now, as we have already altered the table, let's see what the star will give me. You see, it is not giving any value. So if I have to use this, only this one, we can use this. Yani in select, we can give a single attribute, we can give a list of attribute, or we can give a star. Okay, where clause is optional if you are not actually providing any predicate. So if we provide any predicate, select ID, name, ID, name, department name, salary from instructor where C is greater than, कितना दे दो, चलो, you see, I have selected ID, name, department, salary from instructor where salary is greater than 60,000 rupees. So it is giving me ID 10002 and 1004 with Chetan and Pranav as the name, department AGASH, and salary 70,000. Okay, similar thing can be written as equal to, greater than or equal to, then the result changes. All the ones having 60,000 will be coming. Similarly, if we just change it to less than
60,000 comes to this one. Any doubt in this one? Very simple queries. Very simple queries. We have not gone into any complex ones. I'll show the cross product today and leave you. Then you start doing these things. Okay. सर ऊपर में जहाँ वो पिन एक ऐड किए थे ना एट्रीब्यूट टेबल में, हाँ, वो पिन में जो कुछ डेटा वगैरह कुछ डाला नहीं, नल भी नहीं रखा हुआ है, ऐसे मतलब इनिशियलाइज वगैरह मैंने उसको नॉट नल नहीं किया। अभी तक डेटा डाला नहीं, मैंने पॉपुलेट ही नहीं किया। तो मतलब ऐसे तो जो भी मतलब खाली वाला उसको क्या कहा जाता है एट्रीब्यूट हो जाए तो उसमें भी डिस्क्राइब करने पे नल लिखता है ना, वहाँ पे इसमें तो नल भी नहीं लिख रहा। कहाँ डिस्क्राइब करने से नल लिख रहा है? लिखेगा ये जो नॉट नल लिखा है आईडी एंड नेम को मैंने पहले ही नॉट नल देके रखा था। इन द लास्ट क्लास इफ यू हैव अटेंडेड, आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाया था, तो प्राइमरी की फोर्स इट विल हैव टू बी नॉट नल। नेम को मैंने नॉट नल देके रखा था। अच्छा ठीक है। अच्छा मान लीजिए इसी सिचुएशन में अगर हम पिन को ये अल्टर टेबल पिन नॉट नल लगा दें और चूंकि पिन में अभी कोई डेटा है भी नहीं, तो क्या होगा? वो नल रख नहीं सकता है, कोई डेटा डाले नहीं है और नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट भी लगा दिया है। टेबल ऐड अभी पिन को नहीं कर सकते, पैन लगा देता हूं। पैन न्यूमेरिक, अरे बंद कर अपना ये चीज। नहीं आएगा ये। टेबल मस्ट बी एम्प्टी टू ऐड नॉट नल। Got the point? Yes sir, yes sir. So, any more doubts? The simple thing is, if you are putting something not null, you cannot populate this table without the other, without this value. मैंने नेम को नॉट नल रखा है। अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट से फॉर एग्जांपल insert into instructor values null और क्या था ASH ये चलेगा? ये चलेगा? ये वाला क्वेरी चलेगा? दिस वन? No, sir. You see? You see? Not enough values. No, not enough values किसके लिए है? एक और चीज के लिए है। You see?
cannot insert null into this one. At the same time, if we just give this sorry, same time if we give this one row create, so I can take null value. You see, I can take null values for Amit, for pin, because I have not given any integrity constant here. ठीक है, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स या फिर ये जो है आपका नॉट नल, जब आपका टेबल खाली रहे तभी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो पहले से पॉपुलेटेड है, उसके बाद नॉट नल दिया और आपने इसको पॉपुलेट नहीं किया, देन व्हाट विल हैपन? ठीक है, ठीक है, यस सर। उद्देश्य राज, इज इट क्लियर? Yes, sir, clear. Now, so we have seen the select clause. They have given this one, SQL names are case insensitive. आप कैपिटल दीजिए, कुछ भी दीजिए, but at the time of writing, write as you wish. It will give you as far as you are maintaining the domain. You are maintaining the domain. Anyway, now select clause, we have seen this one, distinct department. Select distinct department name from instructor. This one will give you what? Select this first. क्या था ये? Department name from instructor, ये एरर मारेगा, नहीं मारा। तो CSC, CSC, AG, EC, ASH, ASH, ये सब हटा के it will just be giving you the distinct names of the department. Distinct names of the department. Okay, duplicates को हटा दिया जाएगा। Similarly, आप अगर ये select all, इसका ठीक ऑपोजिट है select, okay, let's not write anything. क्या देता है वो देखो, दे रहा है this will also give the same. Okay, this will also give the same. Clear about this? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay, so distinct will just weed out the duplicate names, and all will give you, select all will give you everything, whether duplicate or not, doesn't matter. Now we have already seen extensively this one. Now you can see this select we have done. We can have some arithmetic operations within the values of my attribute as they have depicted. Select, let's say ID, name, department name, salary divided by something 12 from instructor will give me this one, will give me this one.
it should not come like this. It should not come like this. Number is 82. Why it is coming like this? Okay, I'll check this. It should come like 0.22. Why it is coming 6667? I'm not sure. But this one is salary divided by 12. I'll check for this new. Okay, number we have given. Okay, I'll check for this. Okay, this one. Is it clear? The results are clear or not? This query? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'll get back to you on this one. This is salary is numeric 8,2. Why this is the precision is coming up to 4 or 5? I'll get back to you. This one I'm a bit getting confused in this one. Anyway. Okay. Now where clause we have already seen. We can have connectors between where clause like they have given. The where clause specifies condition that the result must satisfy corresponds to the selection predicate of relational algebra. Okay. To find all instructors in computer science department with salary greater than 80,000 rupees or something. So we can write this. Select. Hello. Start. Select ID, name, department name, salary from instructor, where department name is CSC and salary is greater than say 50,000. You see this one. I have used this. You can use this one as well. Okay. Did you get the difference between this and or? I am selecting these attributes from instructor where department name is CSC and salary should be greater than 50,000. So I am getting only one row. Similarly, when I am selecting this many attributes from instructor where department name should be CSC or salary should be greater than 50,000 rupees, we are getting this one. Is it clear or not? And or relation? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So comparative results can be combined using the logical connectives and or and not. So comparison can be applied to results of arithmetic expression as well. Now this will be our last slide. How Cartesian products are being done. We have already seen the Cartesian product in our relational algebra, so I don't have to explain you how this is worked. So instructor.teachers will give me a product between these two relation. I have not taken this teachers, but I'll show you this instructor
you see this, and this department, you see this. I'm just going to have a cross product between this one and this one. So in the department, star from department, I am having this one. A department name, CSC, AG, EC and ASH, and building AABB. Okay, I have not tried this one. So we can have like star from, किसको करना है? Instructor cross department. Instructor, comma. The moment you write this comma means what? This comma means the user wants to have a cross product between these two. So this is the entire table that we are going to have, that is instructor cross department. So all the things that we have, I have this ID, name, department name, salary, PIN, department name from department, and building from this one. So you can see 100 Abhijit, CSC, 5,000, 50,000, PIN is blank. The first department was CSC and A. Second again CSC and A, that is all the tuples of first relation, that is instructor, is combined with the first tuple of department. Once it is done, then the second, which is the second name, Saurish. So we find, okay, sorry. Once we have what, Amit is the last one. Once it is done, first row of department is finished. Then again we start with this one, second row of department, like this. Okay. Okay. AG किसमें था? AGE. AG was in A. So like that. समझ में आया बात आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. So I'll give you some sample, very simple, this one, queries for practice. You can practice, and all other who have not downloaded this one, please download it, because from the next class, next lab session, I'll just give you this particular, queries, and just sit like this. I might ask you to share your screen to show me your results. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I have just already given you a start. You start doing it. More complex queries in every class we will see. See, I have done it till the simple select, where, delete, and drop and alter, these things. Very, 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 very simple. Okay. Now we will combine these things to get more complex queries. Okay. आप लोगों का कुछ पार्ट इसका भी बचा है, क्या नाम है इसका, रिलेशनल अलजेब्रा का, वो डिवाइड ऑपरेशन बाकी है. मैं समय निकाल के एक बार वो भी करूंगा. पहले एसक्यूएल को एक जगह में पहुंचाना पड़ेगा हमको. ठीक है. एक दूसरा, एसक्यूएल आपके इंटरनल्स में आएंगे. ये जो सैटरडे को इंटरनल है ना, इस सैटरडे को है कि नेक्स्ट सैटरडे को? यस सर. इस सैटरडे को. हाँ, इस सैटरडे को है. इसमें आपका एसक्यूएल क्वेरीज आएगा. बट इन द मिड सेमेस्टर एसक्यूएल क्वेरीज हैव नॉट बीन गिवन, बट relational algebra queries are there. Okay, but some questions related to SQL will be there, but no SQL queries. But relational algebra queries are there, so you practice these things. Okay. Yes, sir. Okay. Sir. हाँ, कौन? हाँ, Sir. कमालिका.
सर DESC जो है हाँ। सर वो DTL DML मतलब इन सब में से किस That is पे a आता DDL. है वो काम? That is a DDL command. DESC Okay, is okay, sir. detail. ओके सर. Okay. Thank you. सर एक क्वेश्चन था थैंक यू सर. हाँ दिव्यज्योति. सर वो हमारे जो यूनियन ऑपरेशन है ना, हाँ सर उसमें अगर हम दो टेबल ले, एक स्टूडेंट, उसमें स्टूडेंट आईडी और नेम है, हाँ. और दूसरा टेबल ले एम्प्लॉय आईडी और नेम ले, उसका यूनियन जब करेंगे सब तो जो यूनिक होगा, जो डुप्लीकेट नहीं है वो आएगा और बाकी सब आएंगे. तो टेबल का जो ऊपर, यूनियन में सब कुछ आएगा. हाँ सब कुछ आएगा, और जो डुप्लीकेट नहीं है वो, जो डुप्लीकेट है वो एक बार आएगा. डुप्लीकेट में कुछ इंटरप्रेटर्स डुप्लीकेट को एलिमिनेट कर देते हैं, कुछ एलिमिनेट नहीं करते. तो सर ऊपर जो एट्रीब्यूट्स का नेम क्या होगा तब जो यूनियन होके टेबल जो बनेगा फाइनल रिजल्ट? आपने अगर किसी का भी नेम चेंज नहीं किया तो जो नेम था वही रहेगा. पेन एंड पेपर में जब हम करते हैं तो समझने के लिए A.B. ऐसा डाल देते हैं. से फॉर एग्जांपल दिस वन हमने क्या किया है यहाँ पे, इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट. यू सी डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट नेम रिमेन द सेम, वैसे ही रहेगा. तो सर वो डिपार्टमेंट नेम कौन से टेबल का होगा? वो मतलब स्टूडेंट का होगा कि एम्प्लॉय का होगा? नहीं, आप सोच रहे हैं कि डिपार्टमेंट नेम जो है वो डुप्लीकेट है बोल के वो हट जाएगा, ऐसा नहीं है. डुप्लीकेट रोज हटेंगे, ये नहीं हटेगा. एट्रीब्यूट नहीं हटेगा, ना. यहाँ पे दोनों के एट्रीब्यूट आ रहे हैं ना. ये देखो, ये डिपार्टमेंट नेम है, ये भी डिपार्टमेंट नेम है. यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट घटा क्या? ना, एट्रीब्यूट नहीं घटेगा. अच्छा सॉरी. सर वो ये तो क्रॉस में है ना, इसलिए नहीं घटेगा. हाँ, ये डिपार्टमेंट, अच्छा ये डिपार्टमेंट नेम आपका एट्रीब्यूट सेम है तो डिपार्टमेंट नेम एक बार ही आएगा. किसका होगा ये? तो दिस इज द कॉमन वन. सो वी विल हैव अ सेपरेट टेबल ऑफ दैट. दैट इज अगर आपने स्टूडेंट और एम्प्लॉय का आपने लिया, यूनियन जब आपने किया, कंपैटिबल कैसे होगा? यूनियन में स्टूडेंट का सैलरी होगा क्या? नहीं सर, मैंने बोला ना आईडी और क्या बोलते हैं नेम है, स्टूडेंट जो एम्प्लॉय बन गया या ऐसे कुछ. क्या बोला, फिर से बताओ. स्टूडेंट का एट्रीब्यूट क्या होगा? सर स्टूडेंट आईडी और नेम, और एम्प्लॉय का भी सेम है. डिपार्टमेंट नहीं लिया मैंने वो उसमें. अच्छा, हाँ, तो और एम्प्लॉय का भी तो वही आपका ये तीन ही एट्रीब्यूट रहेगा और उसके वैल्यूज अलग अलग रहेंगे. दैट्स इट. हाँ. अच्छा, वैल्यूज अलग अलग रहेंगे. एट्रीब्यूट वैल्यूज विल बी यूनियन होके सब आएंगे, बस वो वैल्यूज डिफरेंट आएंगे उसमें. हाँ, वैल्यूज डिफरेंट है. ठीक है. Anything more? No sir. Anyone else? So shall I leave the class now? Is it fine? Yes, sir. You start creating these tables. ये आपने ये वाला जो वो है ये डाउनलोड करो, इजीली अवेलेबल है. इसको डाउनलोड करके इसमें जितने टेबल्स हैं यू क्रिएट दोस टेबल्स एज वेल एज पॉपुलेट द टेबल्स यूजिंग इंसर्ट कमांड. समझ में आ रहा है? इसके बाद जब हम लोग ये सब देखेंगे without the populated table it is not possible to see this result. Got the point? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. हाँ, ये सब आप ये करो, पॉपुलेट करो.
मैं आज क्लास इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब टेबल्स को पॉपुलेट नहीं किया एंड टेक्स क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम. टाइपिंग मिस्टेक एक बार होने से दोबारा टाइप करना पड़ता है. प्रॉब्लम इज देयर. सो यू make these tables populated. Okay, then in the next class, when are we meeting again? कब है next class? कल है ना? सर कल 1:30 से 1:30 से है. कल 9 बजे से क्लास होगी. ठीक है, सॉरी सर से हम बात कर लें. ओके सर. ठीक, चलिए. ओके, थैंक यू. Thank you, Thank you, sir. sir. कमालिका, you call me. Thank you, sir. Okay, sir. You call me. Sir, Right away. when? Okay, sir. Thank you, sir.